नमस्कार आपण देखुछन्ते आमारी ओडिशा वर्तमान बुलेटिन आरंभ करबा सबठु बड़ खबर भारत और रूसिया मध्य S-400 क्षेपणास्त्र चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। पुतिन का 2 दिनिया भारत गस्त अवसर में ऐतिहासिक चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। महाकाश सहयोग क्षेत्र में मध्य चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। सूत्र अनुसार रूसियार साइबेरिया प्रतिष्ठा हेब भारतीय निरीक्षण केन्द्र नुआदिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में चलता द्विपक्षीय सम्मेलन में डिफेंस डील रे मोहर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मध्य अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंगों पर आलोचना होइछि। आपण देख पारछन्ति सीधा प्रसारण हैदराबाद हाउस रु राष्ट्रपति रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करछन्ति गणमाध्यम on joint activities in the field of human space flight program to be exchanged by Mr. Dimitrov Rogosin, Director of Roscosmos, and Foreign Secretary of India Shri Vijay Gokhale. Fourth, Memorandum of Cooperation between the Indian and Russian Railways to be exchanged by Mr. Oleg Belozerov, CEO, Chairman of Russian Railways, and Shri Vijay Gokhale, Foreign Secretary of India. Fifth, action plan for prioritization and implementation of cooperation area in the nuclear field to be exchanged by Mr. Alexei Likachev, DG Rosatom, and Shri K.N. Vyas, Secretary, Department of Atomic Energy. Sixth, MOU between the Russian Ministry of Transport and Indian Railways in the development cooperation in the sector of transport education to be exchanged by His Excellency Mr. Nikolai Kodashev, Ambassador of Russia, and the Ambassador of India to Russia, Shri D.B. Venkatesh Verma. Seventh, MOU between the National Small Industries Corporation of India and the Russian Small and Medium Business Corporation on cooperation in the field of micro, small and medium enterprises to be exchanged by Mr. Alexander Bravman, DG Russian Small and Medium Business Corporation, and our Ambassador in Russia, Shri D.B. Venkatesh Verma. Eighth, cooperation agreement in the fertilizer sector between the Russian Direct Investment Fund, Force Agro, and Indian Potash Limited to be exchanged on the Russian side by Mr. Kirill Dmitriev, DG Russian Direct Investment Fund, and Mr. Andrei Guriev, CEO Force Agro, and on the Indian side by our Ambassador to Russia, Shri D.B. Venkatesh Verma. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm also pleased to report that following the summit negotiations, President Putin and Prime Minister Modi ji, both sides have adopted the joint statement, Russia-India, an enduring partnership in a changing world. Excellencies, this concludes the signing and exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to this press event. To begin the proceedings, may I request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his statement to the media. Your Excellency. Your Excellency. Close friend. Vladimirovich Putin. दोनों देशों के सम्मानीय प्रतिनिधि, delegates and representatives from both countries, नमस्कार, दोबरी दिन। 19वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में राष्ट्रपति पुतिन तथा उनके डेलीगेशन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम एक ऐसे देश के राष्ट्रपति के रूप में आपका स्वागत कर रहे हैं जिसके साथ
हमारे अद्वितीय संबंध है। unparalleled ties. इन संबंधों के लिए आपने अमूल्य व्यक्तिगत योगदान दिया है। These relations is राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सोची में आयोजित the memories of our अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की स्मृतियां organized representation मेरे मन में ताजा है। fresh in my mind. उस खास मुलाकात से Special meeting हम दोनों को खुलकर had made it possible गहन चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। frank and detailed discussion. राष्ट्रपति जी, Mr. President, रूस के साथ अपने संबंधों को India gives भारत top सर्वोच्च priority प्राथमिकता देता है। ties with Russia. तेजी से बदलते हुए इस विश्व में हमारे संबंध World और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। relevant. 19 शिखर सम्मेलनों की निरंतर श्रृंखला से Continuous series of 9 हमारी स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को and direction लगातार नई ऊर्जा और दिशा मिली है partnership. और And वैश्विक मामलों पर they have हमारे सहयोग को provided नए मायने एवं मकसद भी मिले हैं। purpose for cooperation on हमारे सहयोग को आपकी यात्रा से your visit has स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिला है। strategic direction. आज हमने Today, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं decisions जो दीर्घकालिक दृष्टि से will हमारे संबंधों को और अधिक ताकतवर बनाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से लेकर to our relations नेचुरल the long term और एनर्जी रिसोर्सेज तक, further bolster ट्रेड से लेकर of our relations इन्वेस्टमेंट तक, from trade to नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण सहयोग से लेकर peaceful use सौर of ऊर्जा तक, energy to solar टेक्नोलॉजी से लेकर टाइगर कंजर्वेशन तक, आर्किटिक से लेकर फार ईस्ट तक from और सागर से लेकर के अंतरिक्ष तक sea to the भारत और रूस के संबंधों का our ties और भी विशाल विस्तार होगा। will be further यह विस्तार strengthened and हमारे सहयोग को अतीत के कुछ गिने चुने दायरों के उस पार ले जाएगा। in fact taken our relations साथ ही beyond the हमारे संबंधों के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ और मजबूत होंगे। this is further भारत की विकास यात्रा में of our रूस हमेशा हमारे साथ रहा है। always stood shoulder हमारा अंतरिक्ष में India's side. अगला लक्ष्य It is developed भारत के a new goal गगनयान in the में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना है। astronauts to space. मुझे बहुत खुशी है The Indian कि आपने इस मिशन में we will रूस के पूरे सहयोग का Russia आश्वासन दिया है। युवाओं में हमारे देशों के भविष्य का कायाकल्प करने की क्षमता है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत एवं रूस की प्रतिभा संपन्न बच्चे सम्मिलित रूप से अपने इनोवेटिव आइडियाज का प्रदर्शन आज दोपहर के बाद करेंगे। ये आइडियाज उन्होंने मिलजुल कर विकसित किए हैं। हम भारत के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में और बिजनेस के व्यापक अवसरों में रूस की भागीदारी का स्वागत करते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब से कुछ समय बाद हम इंडिया रूसिया बिजनेस समिट में भी भाग लेंगे। इसमें दोनों देशों से करीब 200 प्रमुख आर्थिक उद्यमी भाग ले रहे हैं। भारत एवं रूस पारंपरिक हित के सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में घनिष्ठता से सहयोग करते रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन तथा मैंने इन पर भी विस्तार से चर्चा की है। भारत और रूस तेजी से बदलते हुए विश्व में मल्टीपोलैरिटी और मल्टीलेटरलिज्म को सुदृढ़ करने पर एकमत है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, अफगानिस्तान तथा इंडो पैसिफिक के घटनाक्रम, जलवायु परिवर्तन, एससीओ, ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय संगठनों एवं G20 तथा आसियान जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग करने में हमारे दोनों देशों के साझा हित रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपने लाभप्रद सहयोग और समन्वय को
जारी रखने पर सहमत हुए हैं। मैं प्रेसिडेंट पुतिन द्वारा रूस के सुदूर पूर्व के विकास के लिए उठाए गए कदमों से बहुत प्रभावित हुआ हूं। भारत इस क्षेत्र में सहयोग के लिए तत्पर है। आज लिए गए निर्णयों से हमारे सहयोग में और वृद्धि होगी तथा चुनौतियों भरे विश्व में शांति और स्थिरता की बहाली में योगदान मिलेगा। भाई और बहनों, भारत और रूस के संबंधों की शक्ति का स्रोत सामान्य जन में एक दूसरे के प्रति सद्भाव और मैत्री है। हमने आज ऐसे कई प्रयासों पर विचार किया है जिनसे पीपल टू पीपल संबंध और मजबूत हो और दोनों देशों के लोगों की, विशेषतः युवाओं की एक दूसरे के बारे में जानकारी और आपसी समझ और बढ़े। इससे भारत रूस के संबंधों के भविष्य की एक नई नींव का निर्माण होगा। फ्रेंड्स, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि भारत रूस ये मैत्री अपने आप में अनूठी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विशिष्ट रिश्ते के लिए प्रेसिडेंट पुतिन की प्रतिबद्धता से इन संबंधों को और भी ऊर्जा मिलेगी और हमारे बीच प्रगाढ़ विश्वास एवं मैत्री और सुदृढ़ होगी और हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियां प्राप्त होगी। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, स्पासिबा। Heartfelt thanks. Thank you, sir. Thank you, spasiba. The President of the Russian Federation, His Excellency Mr. Vladimir Putin, to deliver his statement to the media. Дорогой друг, Dear friend, Your Excellency Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, it is always our great pleasure to come to India because we know that here we will find an environment of sincere friendship, business-like communication and cooperation. Our nations and states have for a long time been connected through a strong relationship of friendship, mutual respect and sympathy. Yesterday, during the working dinner with Prime Minister Modi, and I'm, by the way, very grateful to you for this sign of friendship, for giving us this opportunity to talk in this very close format and to discuss the most important and relevant topics on the agenda, on the global agenda, and discuss the fundamental issues of Russian-Indian cooperation and to outline new horizons. And today, first in the restricted format and then with participation of delegations, we discussed the key areas of our cooperation. We've had a very meaningful discussion on the whole range of issues of bilateral cooperation. We have discussed in detail relevant topics of international and regional agenda. We have adopted a joint statement which reflects almost all aspects of Russian-Indian cooperation. We have outlined large-scale plans for a long-term prospect. A solid package of interagency and cooperate documents we have just signed today have been prepared for the visit, and its goal is to further develop and deepen our bilateral ties in various areas. It is true that we indeed discussed during these negotiations our trade and investment cooperation, and broadening this kind of cooperation is of utmost importance for me and for Mr. Prime Minister. We have set a goal of increasing the goods turnover up to $30 billion by 2025 and the amount of mutual investments up to $15 billion. And in this context, we were pleased to note that last year mutual trade grew by 21%, exceeding $9 billion. And over the 7 months of this year, it has added another 20%. If we proceed moving at this pace, we will be able to reach our goal even before the set framework. Business circles of Russia and India maintain close contacts. They implement large joint investment projects. Representative Indian delegations took part in St. Petersburg Economic Forum and in the Eastern Economic Forum in Vladivostok. And it is my great pleasure to once again invite Mr. Prime Minister to
participate in the next Vladivostok Forum as the main guest at the Vladivostok Economic Forum in September 2019. Russian-Indian Business Forum is taking place in New Delhi these days, and Mr. Prime Minister and I will deliver a statement to its participants, and we will support useful initiatives to develop cooperation in key areas of economy and finance. Deepening our cooperation in energy sector is one of the topics that we have paid a lot of attention to together with Mr. Prime Minister. We gave a positive assessment of implementation of interagency program of cooperation in the strategic area. Russia is a reliable supplier of hydrocarbons to India. We are successfully implementing long-term contracts through Rosneft and Gazprom to ensure to supply the Indian economy with energy commodities. India imports Russia's liquefied natural gas. We're supplying this gas from Sakhalin-1 field, in which Indian partners own 20%. In June, the first batch of LNG was sent to the Indian market within the framework of the contract between Gazprom and Gas Authority of India Limited. We also welcome interest of energy companies from India to expand their businesses in Russia. We're ready to consider the possibility of cooperating within the such programs as Far Eastern LNG, Arctic LNG2, and also other projects to explore natural resources of Siberia, Yamal, and continental shelf of the Russian Federation. We have discussed in detail the flagship project in the peaceful use of nuclear energy, Kudankulam nuclear power plant. The first 2 units of this nuclear power plant are gaining their full capacity. The 3rd and 4th units are being constructed. The 5th and 6th units are to be constructed next. According to the agreements that we possess, based on Russian high-tech technologies, we plan to build 12 power units in the next 20 years in India. We have touched upon strengthening our cooperation in industry and investment. We talked in particular about machine building, metallurgy, agriculture, medicine, pharmaceuticals, and biochemical technologies. We believe there is a good prospect for our joint cooperation in large infrastructure projects. In particular, Russian Railways company is ready to participate in the projects to build modern railroads in India. We have agreed that Russia will assist Indian partners in exploring outer space. Roscosmos Agency plans to participate in preparing Indian national program to launch the manned spacecraft. And of course, we have discussed in detail the prospects of our military and technical cooperation. For decades, Russia and India have been cooperating successfully in this area. We enjoy a truly close and mutually beneficial relationship, which is an inalienable part of the Russian-Indian strategic partnership. Our cooperation goes beyond supplies of Russian weapons. Our countries produce and develop jointly modern military products. We maintain regular contacts between ministries of defense and general staff of our countries. We improve our combat readiness. In August, Indian units participated for the first time in anti-terror exercises called Peace Mission 2018 that took place in Russia. India's servicemen are active participants of Army International Games in tank biathlon and in competitions of Alpine Special Forces. We have, of course, paid a lot of our attention during our talks to humanitarian component of our relationship. Russia and India have always demonstrated interest in each other's culture and spiritual legacy. This is confirmed by the huge success of the Festival of India in Russia, which will last until March 2019 in 22 cities of Russia. India will host Festival of Russian Culture. I'm convinced all these events will bring the peoples of our countries even closer. There are almost 10,000 Indian students in Russia, and about 100 scholarships are provided to the citizens of India annually. India is a popular direction for Russian tourists. In 2017, about 220,000 Russians visited India. We
received 94,000 Indians in Russia. When discussing international agenda, we have confirmed that Russia and India adhere to similar or concurrent positions on the key global issues. Bearing this in mind, we have agreed to step up our coordination and cooperation at multilateral platforms such as the UN, BRICS, SCO, and G20. We will also cooperate closely to strengthen security and cooperation in Asia. We will combat such challenges and threats as international terrorism, drug trafficking, and transborder crime. We have also touched upon restoration of economy and stable political development of Afghanistan. We have exchanged views on the situation in the Middle East. I have informed Mr. Prime Minister about the situation in Syria. We have also discussed the situation that came as a result of unilateral actions of the US to withdraw from the Joint Comprehensive Plan of Action on Iran's nuclear deal. And in conclusion, I would like to thank Mr. Prime Minister and all of our Indian friends and colleagues for these very meaningful and constructive negotiations. I'm convinced that their results will help further step up strategic partnership between Russia and India and strengthen friendship between our countries and nations. As I have already said, Prime Minister and I will have a meeting with the representatives of business circles as well as with talented Indian children and their peers from the Russian Educational Center named Sirius, who came upon Mr. Modi's invitation to India. I will also meet with Mr. President of the Republic of India. Mr. Prime Minister has put forward a number of humanitarian initiatives, such as to renew the publishing of Russian and Indian books, and also cooperate in some other areas in humanitarian field. I believe it is very important. We will support these initiatives because we believe that cooperation in this field and people-to-people contact will definitely help consolidate the friendship between the peoples of India and the Russian Federation. Thank you. Thank you, Excellency. This concludes the press event. Thank you all for joining. तो आप देखुले नूदिल्ली सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संबोधन करुले गणमाध्यम को 8टी चुक्ति स्वाक्षरित होती दुई देश मध्य जहाँ भितर रही सबुठारु गुरुत्वपूर्ण S-400 एंटी डिफेन्स मिसाइल सिस्टम जहाँकि रूसिया ठारू हासिल करिछि भारत। जा परवर्ती खबर को भारतीय वायुसेनार हल्का विमान दुर्घटनाग्रस्त होती उत्तर प्रदेश बागपतर एक चाष जमी खसी पड़ी विमान। ए दुर्घटन विमान में दुई जन पायलट सुरक्षित अच्छा। हिंडन एयरबेस विमान उड़ा आरंभ करता एयरफोर्स डे प्रस्तुत करने समय यह अघटन होता जमापड़ी। दुर्घटना पर घटनास्थल में वायुसेनार अधिकारी पहुंचा सह किभली यह दुर्घटनाग्रस्त है अनुध्यान करुछंती। माओ मुकाबला नुआ रणनीति आज भुवनेश्वर में बसुची गुरुत्वपूर्ण बैठक। ओडिशा और आंध्र प्रदेश पुलिस डीजी समेत गुइंदा विभाग अधिकारी मैंने उपस्थित रहे। आंध्र में जड़े विधायक और पूर्वतन विधायक नक्सल मैंने हत्या करने पर ओडिशा और आंध्र पुलिस मिलित बैठक डक विश्व सूत्र मिलता सूचना अनुसार खूब शीघ्र उभय राज्य मिलित भाव में माओ दमन ऑपरेशन आरंभ करेंगे। पुणी खटियारे बुहा हेले गर्भवती। मालकानगिरी चित्रकोंडा ब्लॉक अंतर्गत लचमीपुर गाँवर जड़े महिला प्रसव जंत्रणा हेबारु परिवार लोके आंबुलांस को डाकिथिले हेले गाँ को रास्ता नथिबारु आंबुलांस आसी पारला नहीं। फल बाध्य होई परिवार लोके आशाकर्मी और आंबुलांस ड्राइवर गर्भवती को गोटे खटियारे बोही नाଳ पार कराई पद्मपुर को आनिथिले। सेठारु तांको आंबुलांस रे 2 किलोमीटर अणा जाई चित्रकोंडा मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। कोरापुट जिलार विफल स्वास्थ्य सेवा पदारे पड़ा। कोरापुट जिला चिकित्सालय रे विद्युत चलीगले अंधारे कराए रोगी सेवा 2 दिन हेबा एपरी सेवा जोगाइबा परे मध्य नीरव रही प्रशासन। एबडे रोगी हंतसंत होई डाक्तरखाना परिसर रे होहला करुचंती। डाक्तरखाना रे प्रसूति सर्जरी एवं एसएनसीयू भली विभाग रे घंटा घंटा धरी एभली परिस्थिति देखबाकू मिलिछि।
न्यूज 18 कैमेरा पहुंचा पर जिला चिकित्सालय असजड़ा स्वास्थ्य अवस्था धरा पड़ जाइथिला। रोगी अंधार मोबाइल और टॉर्च धरिले नर्स सलाइन और इंजेक्शन देउथिबा देखा मिलता। कैमेरा देखा पर नर्स एवं डाक्तर रोगी सेवा छाड़ी दौड़ी पलाई थिले। डाक्तरखाना रोगी संख्या बढ़ी सेमानंको तले शुआई सलाइन दि जाउथुला। विपज्जनक अवस्था चिकित्सित होता रोगी अभियोग करुवा बेले कैमेरा सामने नर्स किसी कहवाकू पसंद कर नथिले। आम पहुंच आपण शक्ति अधिक खबर पर लगन करंतु आम वेबसाइट news18odia.com बुलेटिन को बर्तमान रखा। नमस्कार।